test this weekend? Yes, for sure, because we have done with this electrolysis. आज की class में we'll be doing MCQs and I'll answer your questions if you have any from electrolysis. Mahnur, Zainam and everyone. And of course we'll be doing some past paper questions. We do have a test on Saturday और पिछले टेस्ट की रिपोर्ट आपको नहीं मिली आई नो इंशाल्लाह वो भी कंबाइन इसके साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा from this test and of course the test which we had two weeks back I guess. Ready everyone? Nail, welcome to the class. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Okay, let me join from this device and let's get started. Please open the worksheet which I've sent in the group yesterday. TVS सबने वो worksheet? Yes. Yes, sir. I sent the worksheet to you yesterday. Yes, I got your worksheet written. Where is our beautiful AS and O levels? Sorry, O levels and IGCSE imported worksheet. So now this is the most important imported worksheet imported from my device. So let's start with the last question. So this is the exact same worksheet which I think the question which we did in our online sessions as far as electrolysis is concerned. I'm sure the screen is visible and I'm perfectly audible, right? Am I audible? Yes. Yes, thank you so much. चलो इसका X-ray analysis करते हैं electrolysis का. Bismillahirrahmanirrahim. The question is about electrolysis. The table shows some information about electrolysis of 3 different electrolytes. You know what is an electrolyte? Electrolyte. What is an electrolyte? Sir, it's a molten molten or aqueous solution of an ionic compound. Aqueous solution of an ionic compound that can conduct current, that have ions, free ions, and can conduct current. Conducts. So that is a complete definition of electrolyte. So the basic condition for a substance to behave like an electrolyte, it should be molten at least or aqueous of an ionic compound that have free moving ions, and those free ions are responsible for the conduction of electrical current. So we have 3 different electrolytes using graphite electrode. Graphite electrode are those made up of carbon. Complete table 8.1 to the names of the product at each electrode. Now the first thing, we have dilute potassium chloride. I told you, whenever it is dilute, so aankhein band karke you can predict the product at anode, which is positive, cathode, which is negative. At anode, you always get क्या मिलेगा आपको anode पे? Oxygen. Because it is dilute. Dilute में anode पे it is always oxygen. कैसे है? Please इधर देखें. We have potassium chloride, Mahnur. It is KCl. So when you ionize this very ionic compound, upon ionization, it will produce potassium ions and chloride ions. And since it is aqueous, it will produce hydrogen ions and hydroxide ions. Now, which of these ions will attract toward anode? Anode is positive. It attracts the negative ions. So which will win the race? Of course, the hydroxide ion. So hydroxide ion, I told you 4 hydroxide ion produces 1 oxygen, 2 water, and 4 electrons. Water is liquid, oxygen is gas. So the actual product is oxygen. At cathode, it is every single time it is hydrogen gas. So let's write hydrogen. So this is true for every dilute solution I told you, except when you have copper instead of hydrogen, right? अब ये भी aqueous है, but this is copper 2 sulfate. So when it is aqueous copper, then instead of hydrogen, copper will win the race. और यहाँ पे तो फिर भी ऑक्सीजन ही जाएगा. भाई ये बात हजम हुई आपको या नहीं हुई? जोया, ज़ैनब, yes. सर एक दफा फिर से समझा दें. Okay, इसका जरा डाइसेक्शन करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं. Aqueous copper 2 sulfate. What exactly this aqueous copper 2 sulfate is? So you have aqueous copper 2 sulfate. It is aqueous. Let's predict the ions first of all. What ions do we have in aqueous copper 2 sulfate? Samir, Amna, what ions do we have?
it will produce copper 2 ions, it will produce sulfate ions, and since it is aqueous, no matter what aqueous ion, what aqueous solution do you have, it always produces H ions and OH ions. यही है. मैंने आपको trillions time बताया है कि first of all you should know how many and what type of ions are present in the solution. Now this is your electrolyte. Since it is aqueous, it must have these two ions. Whatever the aqueous solution, it must have these two ions. ये तो lock कर दिया ना हमने, H तो होंगे, H positive, OH negative. Then since it is copper sulfate, तो copper भी होगा, sulfate भी होगा. Let's write the equation at anode. Anode is positive. It attracts the negative ions. तो नेगेटिव आयंस हमारे पास ये दो हैं. इन दो में से कौन रेस वन करेगा? हाइड्रोक्साइड ही वन करेगा. तो वही वो इक्वेशन होगी जो वहां पे है. 4OH will produce 1 oxygen, 2 water and 4 electron. भाई यहां तक तो ठीक है. कैथोड पे क्या होगा? कैथोड अट्रैक्ट कैटायंस. आई टोल्ड यू every single time it is the hydrogen ion which will win the race except when hydrogen are competing with copper. So copper will win the race. So यहाँ पे copper race win करेगा. Copper ions, they will accept electron to become copper solid. So cathode का product is copper, anode is oxygen because you see oxygen is produced at anode. भाई make sense? Yes. Yes, sir. Yes. भाई लॉक कर दो ना, ये एक्वस वाली चीजें तो लॉक कर दो. कॉपर की एक्सेप्शन है, देखो उसने एक्सेप्शन भी पूछ ली. एंड लेट मी टेल यू दीज आर द मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन. दिस वेरी वर्कशीट is designed from 2024, 2023 and few questions are from 2022. So you can see the recent pattern. Last 3 years के ये questions हैं. And look how the examiner is testing your understanding, you're testing your concept. I think हमने exact same चीजें की हैं when we did the chapter. So now we have molten lead. तो molten के तो product predict करना is the most easiest thing ever. Whenever you have any molten compound, the metal, जो पहली चीज है, it is always collected at cathode. This is true for every molten. Whenever you have molten, the पहले वाला that is at cathode and the second वाला is at anode. तो natural form में, इसका मतलब anode will get iodine. Iodine होता है ना, इसकी natural form iodide तो नहीं होगा. और यहाँ पे you will get simple lead. Metal तो वही होती है जो इनका simple है. So for all this, I mean इस 3 marks के लिए examiner ने आपकी complete understanding test किया for the simple dilute, for the copper aqueous and for the molten compounds. Any question please? Thank you. Let's continue with the same. Part B of the same question, the electrolysis. What exactly, how do we define the term electrolysis? The breakdown, the ionization of molten or aqueous compound, aqueous ionic compound using current. Make sense, everyone? So electrolysis of aqueous copper 2 sulfate gives different product when copper electrode are used instead of graphite electrode. I think we did this in the last 2 classes. Describe the observation during the electrolysis with copper electrode. So let's first write what will you get with copper electrode. So let's say you have copper 2 sulfate aqueous. The ions do we have? What ions do we have here? We have copper ions, you have sulfate ions, everyone, and you have hydrogen ion and hydroxide ion. And imagine this time we have anode made up of copper itself and cathode made up of copper. Now the question is, raise your hand if you know the answer. Which copper is impure, anode or cathode? Which is impure copper? Shabash. Which is impure copper? Amna. Anode. Anode is impure. Excellent. So basically this process is used for the purification. This is impure thing, and at cathode you always take the pure reference, right? So this time none of the ions will be attracted because anode itself is made up of copper. So copper anode start dissolving and release copper ions, and those same copper ions will be attracted toward cathode and get deposits. So this copper that is deposited at cathode is actually the pure copper, and that's why we were using this reaction to purify for the purification purpose. Now what would you observe? At anode, it start dissolving. ये dissolve होना start होगा या नहीं होगा? Dissolve का मतलब होता है उसके अंदर, you know, पहले तो ये solid था,
It was solid initially. Now, as the reaction proceed, it starts changing into aqueous ions. तो कॉपर सॉलिड से एक्वस में जाएगा, इसका मतलब सॉलिड चीज किस में जा रही है, एक्वस में. तो वी कैन से एनोड डिसॉल्व्स. डिसॉल्व हो गया. क्यों डिसॉल्व हुआ? एज कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइजेस टू कॉपर 2 aqueous ions, right? Cathode get deposits. Cathode का साइज तो बढ़ेगा ना, because the copper aqueous ions get deposit at cathode. So cathode get deposits of pure copper as copper 2 aqueous ions reduced at cathode to Cu. But make sense, everyone? This is only true when you are using copper electrode. If you are using copper electrode, this is possible. But if you use graphite electrode, तो एनोड पे ये इक्वेशन नहीं होगी. फिर एनोड पे क्या इक्वेशन होगी? फिर एनोड की ये इक्वेशन होगी which we wrote, जो हमने यहाँ लिखी. These two equation when you are using graphite electrode. In fact, कैथोड की इक्वेशन तो अभी भी exactly same है जो वहां पे है. एनोड की चेंज होती है. So लॉक कर लें इसको सब लोग. If you are using graphite electrode, तो एनोड पे हाइड्रोक्साइड जाएगा. And if you are using copper electrode, so copper itself will dissolve like this. Make sense, everyone? Yes. Thank you. Magnesium is manufactured. I'm so sorry to disturb you, but can we say that at the cathode it's covered with a pink solid? Yeah. I mean, वो initially भी pink ही था ना, क्योंकि cathode was made up of copper initially, and now we are getting more pink solid being deposited on the surface, right? Yep. Okay. Magnesium is manufactured by the electrolysis of molten magnesium chloride. Now, if it is molten magnesium chloride, what ions do we have? देखो magnesium chloride होता है MgCl2. How do I know? Magnesium is +2 because it is in group 2 of the periodic table, and Cl is in group 7, so it is 1-. So since we have different charges, this 2 will get on this side, 1 on this side, so you will get magnesium chloride MgCl2. Now, when you pass the current through MgCl2, it will produce the same ions it was made up of. So it will give you the same Mg2 plus ions and Cl negative ion. To balance this, I need to put 2 over here. So these are the ions that you have in the solution, right? Now, construct the equation. Okay, हो क्या रहा है? At anode, chloride ion react to make chlorine molecule. So we know that anode attract the anions. And at anode, chloride ions oxidizes to chlorine. How to balance? Chloride उसने कहा chlorine में जाएगा. कैसे जाएगा? We have 2 chlorines here. तो यहाँ 2 लगाएंगे. 1 chloride will lose 1 electron. 2 chloride must lose 2. So I need to put 2 electron here, right? So ये इसको आप molten लिख सकते हैं और ये gas. What would you observe at anode? Bubbles of pale yellow gas. All right. For 3 marks, I'm giving you less than 3 minutes every. D and E. सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? Excellent. शाबाश. कर लो यार जल्दी से, इसको हम सिलेबस को एक बार कंप्लीट करें और फिर जरा रेस लगाएंगे इंशाल्लाह विद पास्ट पेपर्स, बिकॉज बाय दिसंबर आई वांट एवरीवन टू बी रेडी and then we'll start doing yearly papers because we have हमने ATP करना है which take at least a month. एक पूरा महीना लगाना है इंशाल्लाह on ATP paper because we haven't done ATP so far. Yes, Anaya. Sir, I'm done. Excellent. Yes, Mahnur, Zoya, Haifa, Samir. Okay, let's start with Zoya. So we have dilute hydrochloric acid. Again, we have dilute. Equation at cathode. Zoya, what is the charge on cathode? Cathode is positive electrode or negative electrode, Zoya? Positive. Astaghfirullah. Say Oh, astaghfirullah. no, negative. No. It is negative electrode. It would attract the Yes. positive ions, you know. So what Yes. positive ion it would attract? If the solution is dilute, which positive ion it would attract? Plus. Hydrogen ions. Excellent. Hydrogen ion, it would attract hydrogen ions.
Now we know hydrogen ion will change into their element which is H2. Hydrogen का element तो H2 है. इसको balance कर लेते हैं. अब कैसे करेंगे? We need to put 2 over here. 2H One plus hydrogen plus ion. 3 minus. Yeah. Yes, one hydrogen ion needs 1 electron. 2 hydrogen ion needs 2 electron, and that's it. Yes. Okay. Aluminum is manufactured by the electrolysis of aluminum oxide dissolved in cryolite. Why do we use cryolite? मैंने last class में बताया. What is the role of cryolite and why do you dissolve it in? Why do you dissolve aluminum oxide into the cryolite? Anyone in the class? Shabash. What is the role of cryolites? I told you aluminum oxide is a high. Yes. It reduces the melting point of aluminium. Excellent. Excellent. Aluminum oxide is a giant ionic solid with a high melting point. So you cannot electrolyte the solid compound. By the way, why we can't electrolyte a solid aluminum oxide? Why it is difficult or why it is not possible to electrolyte, to use it as an electrolyte, aluminum oxide? Anyone? Raise your hands. बता दो यार. Why you can't electrolyte the solid ionic compounds? As in solid, बताया था यार, खुदा का खौफ कर लो कुछ. Ions cannot move. Ions cannot move. In solids, ions cannot move. So we have to convert this either into aqueous form or molten form. But the problem for aluminum oxide is it doesn't dissolve in water. It is insoluble in water. So if you want to do electrolysis of aluminum oxide, in any case, you have to melt it. For the melting, since the melting point is above 16 or 1700 degrees Celsius, it requires a huge amount of energy to melt. So then there's a savior, cryolite. Cryolite decreases the melting point of aluminum oxide from 1800 to just 800. So ये liquid बन गया. The role of cryolite is to decrease the melting temperature. Decrease the melting point of aluminum oxide. What is the name of aluminum oxide, by the way? Anyone in the class? The name of aluminum oxide. Although हमने नहीं पढ़ा हुआ, but I expect you to answer. The name, yes. Bauxite. Zoya? It's called bauxite. The name of aluminum oxide is bauxite. So to decrease the melting point of bauxite, we use what? We use aluminum oxide, cryolite. Now imagine ये आपके पास molten form में आ गया है. Okay. Imagine this is in the molten form. आपने इसमें से current pass किया. It will be ionized. It will be ionized to give you different ions. अब aluminum is in group number 3 of the periodic table. तो इसके पे क्या charge आएगा? What charge it would have? 3 plus. Oxygen is in group 6. So what charge would you get on oxygen? 2 minus. Since you know the charges on group number, अभी करवा दूंगा दोबारा इंशाल्लाह next chapter. अगर आपने balance करना है तो aluminum 2 है और oxygen 3 है. But the fact of the matter is, we have aluminum ions and we have oxide ions, right? Now, cathode is the negative plate. Zoya कह रही थी positive है, शायद Zoya के पास positive हो. So cathode is negative. It would attract the positive ions. What are the positive ions we have? We have aluminum ions. Zoya, aluminum ions ही positive है? Yes. Yes. Thank you, Zoya. So aluminum ions are the positive ions. And they will reduce, they will gain electron to form aluminum. देखो जो metal होती है, जो positive चीज होती है ना, उसने सिर्फ अपने simple symbol में जाना है. Simple. Sodium positive है तो उसने Na बनना है. Mg2 plus है. Whatever the positive you have except hydrogen, क्योंकि उसने H2 बनना होता है, every cation simply goes to their symbol. अब इसका मतलब ये है कि we need to get rid of this 3 plus. So I told you whatever the charge you have, just add the same amount of electrons and you will get aluminum. That is the equation at cathode. At anode, we have oxide ion. Because anode is positive, it would attract the anions. Now, what is the natural form, the elemental form of oxide ion? ये किस में change होगा? O3 में, ozone में जाएगा? Shamil? Will it change into O3 or simple O? Sir, wouldn't it be 2O2 minus is equals to O2 plus 4E minus? Zoya, Shamil ने तो सब कुछ ही बता दिया. मैंने तो इतने सारे questions ready किए हुए. So oxide ion will change into oxygen, right? Now let's balance. We have 2 here. तो balance करने के लिए यहाँ 2 लिख लिया. Now one oxide ion will lose 2 electrons. Since we have 2 oxide ion,
together they will lose 4 electrons. But you know what? Anode is made up of carbon, which is graphite. So this oxygen produced will react with the graphite anode to convert, to burn the anode into carbon dioxide. We have to replace the anode after regular intervals because the oxygen produced at anode will burn the graphite anode to CO2. Make sense, everyone? Yes. So the actual product, देखो actual में तो oxygen बना है, but oxygen you can't collect really oxygen because that oxygen produced will burn the carbon to get you carbon dioxide. So anode पे technically आप carbon dioxide लोगे because anode is made up of graphite and it will be burned off and eventually you will get CO2 or CO. And that's why you have to replace after regular intervals. Make sense, everyone? Yes, Say sir. yes. Yes, Niall. सर ये समझा दें कि 4 ई माइनस कैसे होगा? हाँ ठीक है. अच्छा चले मैं यहाँ पे ये 2 नहीं लगाता. ओके, नाइल पूछ रहे हैं कि सर ये इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, तो व्हाई इट इज देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन. ओके, देखो यहाँ पे पीछे आओ जरा, मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है. नाइल से पूछ रहा हूँ, व्हाई आई रोट 2 इलेक्ट्रॉन हियर? सर बिकॉज़ Cl2 that like 2 chlorine. Because we have one imagine यहाँ पे ये नहीं है, imagine ये नहीं है यहाँ, because one chloride will lose one negative charge. Since we have two of them, so 2 chloride. इसको यूं कर लेते. अच्छा चले मैं इसको आपकी आसानी के लिए यूं कर लेता. Imagine ये इस तरह है, एक क्लोराइड है फिर एक और क्लोराइड है. So each chloride will lose 1 electron. तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2. अब इधर आ जाओ. How many oxide ion do we have? 1. नहीं ना, 2 है. बैलेंस करने के लिए देखो, वी हैव 2 O2 है ना, तो वहां पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए. एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये. सो इन टोटल वी हैव 2 ऑक्साइड आयन. One oxide will lose 2 electrons. So together both of them will lose how many electrons? 4 electrons. Okay. Make sense? 2 and 2. Yes. Yes, sir. And I have one more question. Yes, please. Sir, why wouldn't it be Al2 in the end? I mean, metals are always monoatomic. Why it would be Al2? It's not non-metal. It's not oxygen like O2. Metals are always monoatomic. Metal can't be 2. Have you ever heard sodium is like Na2 or magnesium is Mg2? Metals are always monoatomic. Giant होती है ना, तो जो भी उनका symbol है वही उनका formula है. Non-metals को हम 2 की form में लिखते हैं. Right? Correct? Okay, sir. Okay. Because जिस तरह copper है, तो copper has to be Cu. It can never be Cu2. Non-metals exist as simple molecular. That's why we convert them into 2. मैंने देख लिया. Okay. Everyone, please. 2 minutes for 4 marks. Read the entire statement and then answer the question. Okay? Fatma, you too as well. भाई इससे आसान चीज वो नहीं. अब देखें आप, अगर आप थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करो तो क्वेश्चन अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर 3 or 4 क्वेश्चंस, स्पेशली फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस. इनफैक्ट ओ लेवल्स में तो यू जस्ट डू few worksheet, I mean 2 worksheet of every topic, and then you would notice that the questions तो repeat हो रहे हैं. भाई ये तो वही चीज बार बार आ रही है शक्ल बदल के. And this is actually, जब आप देखेंगे तो आप फील भी करेंगे इस चीज. एक्चुअल में ऐसा होता है. हैं? Yes, Shamin, done. Yes, sir. Excellent. सबने कर लिया भाई? Yes, sir. You know, मैं बहुत खुश हूँ आज. अभी मुझे एक मैसेज आया.
तो मुझे लगा शायद वो एक्चुअल में हो गया है, लेकिन वो हुआ नहीं। आई होप आपको समझ आ गई हो। हाँ ले जाओ ले जाओ। नहीं किस किस को सर, समझ आई समझ नहीं मेरी है बात? क्या हुआ है। किसी को समझ नहीं है? ओहो नाया, आपको क्यों समझती? यू नो, आई लव खान साहब, द ग्रेट इमरान खान, और अभी सर उनकी समझ बेल गया। हो गई है तो लेकिन वो अभी एक केस उनका पेंडिंग है, तो उनको छोड़ा नहीं है उन्होंने। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां दे, बहुत मुश्किल होता है कोई भी चीज। ओके, concentrated aqueous calcium bromide. So we have concentrated calcium bromide. So calcium bromide is CaBr2, right? CaBr2. Concentrated का मतलब है तो पानी ही ना. So what ions do we have? We have calcium ions, we have bromide ions, and since it is aqueous, so we have hydrogen ions and hydroxide ions. तो concentrated है तो एनोड पे who will win the race? The halide ion. अगर डाइल्यूट होता तो वह रेस जीत जाता। यहां से तो रेस हमेशा इसी ने जीतनी है एक्सेप्ट के कॉपर हो, कॉपर तो नहीं है ना। तो प्रेडिक्ट उसने सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है। तो एनोड इज पॉजिटिव, एनोड अट्रैक्ट द नेगेटिव आयन, तो ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमाइड जाएगा, विल मेक ब्रोमीन, एंड कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगी, राइट? हाइड्रोजन इज H2 and bromine is Br2. Does it make sense, everyone? Yes, thank you. This time we have molten calcium bromide using graphite electrode. Construct the half equation. सबसे पहले what ions do we have? Calcium CaBr2. It would produce calcium ions. It would produce bromide ions, right? Calcium ions and bromide ions. Now cathode will attract these cations, right? So cathode will attract these cations. What charge do we have on calcium 2 plus? Just simply add 2 electron and give it calcium. And anode will attract the bromide ion. Bromide ion will give you bromine क्योंकि ये 2 होता है, and they will lose 2 electron. Thanks so much. Thank you. सबको समझ आ गई बात? Yes. sir. Yes, So sir. are you ready for the test on Saturday, inshallah? Both from Yes, sir. acids and this very chapter called electrolysis, acid, bases and salts and electrolysis. अच्छा मैं separate test बना दूंगा. Don't worry about those who just join the session. I mean, तो आपको मिल जाएगा, electrolysis का अलग भी मिल जाएगा. But those जिनको जो ready हैं start से हैं, अली आपको मिल जाएगा separate test, and Haifa you have option if you want to attempt combine you can, but you can attempt electrolysis. और शामीर ने शायद हमें late join किया था. So I'll make 2 tests. Don't worry. Combine one and a separate. Sir, I was here since first day. No, मैं उनको कह रहा हूँ, ये हमारी एक और बेटी है यहाँ पे, आपका तो पता है मुझे शामीर, आपको I senior thought you said citizen. Shami. No, Shameen is among senior citizens of this batch, and we do have more other students. Okay. So concentrated, जब हमने start किया था मेरा ख्याल है, remember I was in China back then, तो मुझे चाइना से आए हुए भी इतना टाइम हो गया था. Concentrated aqueous potassium bromide is electrolyte. ये तो फिर से वही नहीं आ गया हैं? ये हुआ कैसे? Exact same questions, man. ये तो exact repeat हो गया ना? I think ये तो repeat हो गया. वो कैसे गया? ये तो भी टेस्ट हमने किया ही नहीं है, छोड़ो इसको. चलें ये वाला करते हैं. Potassium iodide is an ionic solid decomposed lattice of potassium ions and iodide ions. Predict the product at each electrode during the electrolysis of concentrated aqueous. So whenever it is aqueous, no matter concentrated है या dilute है, एनोड पे तो हमेशा क्या उसने कहा, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट. एनोड पे तो बनेगी ऑक्सीजन. नो नो नो, कैथोड का लॉक होगा ना. कैथोड पे तो बनेगी हाइड्रोजन. ठीक है भाई, मैं दोबारा ओपन करके लिख देता हूँ. इट विल प्रोड्यूस पोटेशियम आयंस, आयोडाइड आयंस, एच आयंस एंड ओएच आयंस. सो नो मैटर व्हाट, ये तो जाएगा ही जाएगा एक्सेप्ट के कॉपर से मुकाबला हो, और ये जाएगा कैथोड पे हाइड्रोजन बनाएगा. अब सिंस दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड में हु विल विन द रेस? इट इज आयोडाइड आयन टू गिव यू आयोडीन. So you will get I2 and you will get H2. भाई सबको समझ आ गई मेरी बात? Yes. जी सर. Yes, sir. ठीक है, excellent. चलिए ये भी कर लेते हैं यार. मैं सोच रहा था ये आपको वैसे आपने की होगी यार, सपोज आपने वर्कशीट की है, क्योंकि ये तो कल आपने करनी थी ना. मेरे ख्याल उन्होंने भेज दी थी टाइम पे. कब मिली थी? टाइम पे वर्कशीट मिल गई थी आप लोग? होमवर्क Yes, कर लिया sir. करो यार. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव यू नो
अच्छा जी, किधर है हमारा ग्रुप्स जी? बिल्कुल, आपको 7:30 से पहले मिल गई थी। चले, यानी होप तो होगी। फिगर 3.1 shows the apparatus used for the electrolysis of ये concentrated कितनी बार हमारा सब्र का इम्तिहान ले रहा है। concentrated NaCl, लेबल दिस, तो लेबल का मतलब है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब दिस इज एनोड और ये नेगेटिव है, दिस इज कैथोड। बस यही लेबल करना है और भी कुछ करना? लेबल द कैथोड। अच्छा, कैथोड लेबल कर दिया हमने। एक्सप्लेन व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज, क्यों कंडक्ट करता है भाई? इट हैज फ्री मूविंग, नो, सॉल्यूशन में आयंस, सॉल्यूशन में आयंस। प्रेडिक्ट द नेम द प्रोडक्ट एट कैथोड। कैथोड अट्रैक्ट कैटायंस, तो कौन कैटायन जाएगा भाई? भाई जो भी एक्वस हो कैटायन तो हमेशा हाइड्रोजन होगा, एक्सेप्ट के कॉपर का मुकाबला हो जाए, तो कैथोड पे इट इज ऑलवेज। उसने कहा नेम, तो डू राइट द नेम, डू नॉट राइट द फॉर्मूला, आई मीन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। Chlorine is formed at anode, construct the equation. How many times, bro? How many times? भाई ऐसे क्लोरीन बनती है, ऐसा ही एलियसनैन भाई। Yes, yes, thank you. Graphite is suitable as an electrode because it conducts electricity. State one other property of graphite that makes it. Yes, ये तो हमने किया ही नहीं भाई। भाई graphite is used as electrode because it is good conductor. There is one other reason because of which we use the graphite as an electrode. What's that? Haifa is very confident. Yes, Haifa. Sir, it doesn't react. It is an inert electrode. Excellent, excellent. Yes, Zoya. Agree? Yes. Okay. It is inert. लेकिन एक थर्ड रीजन भी है, अगर कोई बताएगा उसको 10 रुपए मिलेंगे। It is inert. Sir, it's because it's very cheap. नहीं, वो जेन्युइन रीजन है। चीप तो चले ठीक है, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, बट द अदर रीजन इज, जिस चीज को भी आप देखो, इलेक्ट्रोलिसिस होती है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, सो यू रियली कांट यूज electrode made up of that material which melt at low temperature. So graphite, we all know it is giant covalent, so it has very high melting point as well. So this is one of the other reason. अगर उसने दो क्वेश्चन में बता दें कि it is good conductor, it is inert, give another reason why it is used as electrode, so then you should mention this third. But second में हमेशा give the priority to this inertness. Inertness is should always be the priority, but it has very high melting point. And that's the reason that we use it as electrode, because it doesn't melt at even high temperature because it is giant covalent. State the product formed at cathode when molten. तो molten में भाई NaCl, molten में पहले वाला कैथोड है, molten में तो लॉजिक सीधी सीधी और ये एनोड है। तो कहाँ का प्रोडक्ट पूछा है उसने? कैथोड का, तो सोडियम। थैंक्स सो मच, सबको समझ आ गई बात? यस। टाइम अभी मैसेज मिल जाएगा आपको, एट व्हाट टाइम डू वी हैव टेस्ट। थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी टेस्ट के लिए, आई मीन वीकेंड है तो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट। टाइम की थोड़ी रिलैक्सेशन होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम ड्यूरेशन की होगी, बट सबमिट करने की, बिकॉज आपको whenever you will start, चलिए जल्दी से मैं बता देता हूँ, whenever you will get the test, मिल तो आपको जाएगा इंशाल्लाह by mid of by 11 or 12 Saturday morning पाकिस्तान टाइम। सो उसको आप जब भी स्टार्ट करेंगे उसका जो टाइम मेंशन होगा उससे एक्सीड नहीं करेंगे। अगर आप एक्सीड करेंगे तो आप ऊपर लिखेंगे कि आई इट टुक मी दिस मच टाइम और दिस मच टाइम, बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन द टाइम मैनेजमेंट एज वेल। सो ऑनेस्ट रहना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे दिस इज डिस्कशन क्लासेस। ऐसा नहीं कि मैं आपकी कोई कैम्ब्रिज ग्रेडिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, बी ऑनेस्ट इन टेस्ट सो दैट आई कैन एक्चुअली असेस योर प्रोग्रेस। अगर आप वो करके अच्छा मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आपका एम मुझे इम्प्रेस करना नहीं है। टुगेदर वी आर वर्किंग फॉर अ कॉमन पर्पस टू इंशाल्लाह गेट अ गुड ग्रेड इन कैम्ब्रिज, इसलिए आई नीड योर ऑनेस्ट ऑनेस्टी। तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑफ कोर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी ज्यादा मैटर करती है, because you people need to keep check on yourself. So see you on inshallah Saturday, instructions आपको मिल जाएंगी टेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।